Priyanka Shah welcomes you all back to your English online classes. So, my dear students, हम लोगों ने हमारा चैप्टर या हमारा लेसन कंप्लीट कर लिया है एंड इन टुडेज क्लास वी विल डू दी रिवीजन कि नोटबुक में हमको कैसे हमारा नोट्स मेंटेन करना है, हाउ टू मेंटेन आवर नोट्स, हाउ टू राइट देम एंड यस विद दिस विल बी आल्सो डूइंग द रिवीजन ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड टिल आवर प्रीवियस क्लासेस. So, without wasting your time, wear your headphones, take out your notebook and get ready for the revision. So my dear students, let's begin now. So वीडियो 3 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिवीजन कर चुका है. ओके, इन आवर प्रीवियस रिवीजन वीडियो वी डिड अप टू वर्ड मीनिंग्स 20 we saw and revised. Now from we will do the revisions from whatever things we did from video 4. Okay, now coming to video 4, what all the words are, let's see once again. So in 21, bouquet meaning a bunch of flowers. Flowers के एक गुच्छे को हम क्या कहते हैं? Bouquet. Okay. Now the next word bloom meaning to grow. बढ़ना. When you grow, that time you call it as bloom. Okay. Most probably this bloom word is used for flowers. Okay. Now the next word capture. Take hold of. Take hold of. किसी को पकड़ना, किसी को hold कर लेना. That is what you call as capture. Okay. Now the text 24th word, that is bold meaning brave. बहादुर को हम क्या कहते हैं? Bold. Okay. Now the next word 25th word, that is century. A period of 100 years. A period of 100 years. 100 साल के एक पीरियड को हम पूरा क्या कहते हैं? Century. Okay. Now the next choir. A group of singers. A group of singers. Singers के ग्रुप को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? Choir. Now cheap meaning low in price. Low यानी कि कम. When something is low in price, it is known as cheap. और you can even say सस्ता. सस्ती चीज़ों को हम क्या कहते हैं? Cheap. Okay. Now next comes conserve meaning protect from harm. किसी भी चीज़ को नुकसान होने से बचाने को हम क्या कहते हैं? Conserve. Okay. Then comes clown meaning joker. सर्कस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, right? Joker. So what is joker is also known as clown. Okay. Now the next word is conclusion meaning ending. When you are ending something or when you are ending a topic, that time it can be said as conclusion. Okay. Now about video 5. Video 5 में हम लोगों ने क्या क्या words किए? Let's see that. So condition meaning situation or state. किसी भी situation को हम क्या कहते हैं? Condition. Whether that situation can be good or bad situation, it is known as condition. Okay. Then comes confidence meaning firm trust. खुद पे भरोसा होना कि you can do anything. That kind of trust when you have in yourself, that trust is known as confidence. Okay. Then comes cash. ये भी बहुत common word है. You have heard this before also. Meaning given here is money in coins or notes. पैसा किसमें? सिक्कों में या तो notes के तौर पे भी, paper notes के तौर पे भी. So whether the money is in coins or notes, it is known as cash. Okay. Then comes the next word, that is cruel. Cruel meaning unkind. When someone is not kind to you, whether they are physically not being kind to you or their words are also not kind to you, it is known as cruel. When someone is unkind, it is known, that behavior is known as cruel. Okay. फिर dedicate. Dedicate meaning devote to a special task. Devote to a special task. किसी एक काम को करने के लिए जो पूरी तरीके से शिद्दत से लग जाते हैं ना, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? Dedicate. It's known as dedicate. Then comes defeat. Defeat meaning victory over. किसी चीज़ के ऊपर आप जीत जाते हैं ना, so what we call as defeat. या तो किसी को हराना या खुद जीत जाना. That is what we call as defeat. Okay. अब ये तो defeat है. Then the next word is defect. Defeat and this is defect. Defect meaning having some error. Having some error. कुछ problem होने को हम क्या कहते हैं? Having some error. Then comes deficiency. Deficiency meaning lacking something. Lacking something. किसी चीज़ की कमी हो जाना. When you lack something, that time it's known as deficiency. Then comes the next word, that is dehydration. Dehydration meaning lose water from body. जब आपकी body से पानी कम होने लगता है किसी कारण से, that time it's known as dehydration. Then comes the next word, that is dense meaning closely compact. Closely compact. Okay. बहुत सब चीज़ें बहुत पास होती हैं, एकदम close होती हैं, that time it's known as dense meaning closely compact. So students, now for video 6 what we did, हम लोगों ने
11th-12th वर्ड्स के लिए सेंटेंसेस नहीं लिखे थे, राइट? इन वीडियो 3 वी जस्ट रोड द वर्ड्स एंड द मीनिंग्स बट वी डिडंट रोड द सेंटेंसेस. So in videos, for videos is what I did, I gave you a PDF. Yes, in that PDF I have written all these words, their meanings and also the sentences I have given. So जिनके पास अगर PDF नहीं मिली है तो वो इस वीडियो से भी देख के लिख सकते हैं. And if you want the PDF also, I can give you that as well. Okay, just text me in my WhatsApp. I'll be sending you the PDF. Now coming here, the words, let's see the meanings once again. Antique meaning an old valuable object. कोई पुरानी कीमती चीज़ को हम क्या कहते हैं? Antique. Then comes annoy, to displease or irritate, किसी को परेशान करना, उसे हम क्या कहते हैं? Annoy. Then comes artificial, not real. जब कोई चीज़ real नहीं है, that time it's known as artificial. Then comes the next word, aside. Aside, towards one side, किसी एक तरफ, either right or left or front or back. When something is said to be towards one side, किसी एक तरफ, then it's known as aside. Then comes the next word, appearance, look. आपका जो personality, आप दिख कैसे रहे हैं, look, your look, how you are looking, that is known as appearance. Then comes bedridden, meaning forced to stay in bed. Forced to stay in bed, मजबूरी के कारण या किसी को मजबूर किया जाता है बिस्तर में रहने के लिए या बेड पे आराम करने के लिए. When someone is forced to stay in bed, then it is known as bedridden. Okay. Then comes the next word, that is bitter, meaning harsh, pungent in taste. कोई चीज़ जो कड़वी है स्वाद में, बुरी है स्वाद में, that time it's known as bitter. Then comes the next word, that is beneath. Beneath meaning below or under. Below or under. किसी से शर्माने को स्टूडेंट्स व्हाट वी से blush, meaning to feel shy. Then comes the next word, boutique, meaning a small shop selling fashionable clothes. A small shop selling fashionable clothes. ऐसी छोटी सी दुकान जहाँ पे fashionable कपड़े बिकते हों, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? Boutique. Okay, then comes in the video 7. This was the last video of your chapter 2. Okay, and with this we completed our total lesson 2. Then let's see the last 10 words, my dear students. Diligent, hardworking. Someone who is hardworking is also known as diligent. Then distinguished, meaning honorable. Respectful person, कोई बहुत ज़्यादा respectful person है, honorable person है, उन्हें हम क्या कहते हैं? Distinguished. Okay. Then edition, a published book. ऐसी बुक जिसे किसी पब्लिकेशन में पब्लिश किया हुआ होता है, a published book is known as edition. Now the next 44th word, that is educationist. Educationist meaning expert in educational methods. Expert in educational methods. So जिसको भी educational methods में जो expert होते हैं, okay, who knows how to deal with the things like how to conduct exams or how to teach and all those things, if someone knows, they are known as educationist. Okay. Then the next word, escalator. Escalator, moving staircase. ऐसी सीढ़ी जो move करती है स्टूडेंट, राइट? I gave you the examples of staircase in malls. Malls में generally ऐसी सीढ़ी होती है ना, that moves by themselves, right? So that those stairs are known as escalator. Then comes the next word, everywhere. Everywhere meaning at all places. At all places, हर जगह जब कोई चीज़ होती है, that is known as everywhere. That word is known as everywhere, meaning at all places. Okay. Now the last few words, excited meaning eager. जब बहुत ज़्यादा कोई उत्सुक होते हैं किसी चीज़ को लेके, those times we say it as excited. Then the next word, exhibition meaning a public show of work of art etc. Public show जब कराया जाता है जहाँ पे publicly show करते हैं किसी भी work या art को, उसे हम क्या कहते हैं? Exhibition. Now the second last word, extinct meaning no longer existing. कोई चीज़ खत्म हो चुकी है या गायब हो चुकी है, उन्हें हम क्या कहते हैं? Extinct. And the last word, that is fade meaning lose color, light और sound. Loss color, light और sound. कभी कलर, रोशनी या आवाज़ ये कम होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं. Okay, when they start losing it, we call it as fade. So my dear students, we completed total 50 word meanings. पहले भी हम लोगों ने रिवीजन किया है वर्ड मीनिंग्स के. इन दिस वीडियो ऑल्सो फ्रॉम द वर्ड 21 वी once again revised the words and also their meanings. I hope you understood every word and their meaning.
अगर आपको कोई वर्ड या मीनिंग नहीं समझ में आया है तो वो पर्टिकुलर वीडियो आप दोबारा चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन चेकआउट द मीनिंग एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एज वेल. सो आई होप विद दिस यू विल कंप्लीट ऑल योर नोट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू मेंटेन योर नोट्स. हम लोगों ने एक बार रिवाइज भी कर लिया कि अब तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं एंड आई ऑल्सो मेड यू डू दी एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज वेल. सो या आई होप यू विल बी डूइंग एवरीथिंग वेरी नाइसली एंड नीटली एंड अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे घर पे बिकॉज होपफुली दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू कंप्लीट योर नोट्स. सो पेरेंट्स को बिना परेशान किए इंडिपेंडेंट होके खुद से अपने होमवर्क्स एंड अपनी स्टडीज कीजिए. ओके, एंड ऑल्सो मेमोराइज ऑल द थिंग्स वी हैव स्टडीड टिल नाउ. And your English teacher will be back again in the next class with some new topics to study. Till then, my dear students, take care. Goodbye.